Hi guys, welcome back to my channel and I hope you all are safe and sound and I'm so sorry कि it's been a month कि मैंने एक वीडियो नहीं कोई भी वीडियो नहीं करी है so there were some reasons but it's okay. So we are back and now here it's the coding challenge 9 we are going to continue. So a coding challenge 9 is to find the area of a triangle. So we'll be given some data and for that we have to find the area of triangle. We'll ask the user the data and with that we'll calculate the area of the triangle. So let's see. So we'll make it in VS. So my everything is here in this directory only. So okay. So I'll just go and search for Visual Studio. So it's loading and says something else. I'll start a new file and I'll save it as in my VS directory as so we are going cc9.py coding challenge 9.py. I save it and succeed. Yes, so I have done some configurations to my Visual Studio, so this might be different as yours. So first thing is what is first we have to introduce ourselves. Like this is a area of a triangle calculator, something like that. So we'll just print welcome to area of triangle calculator. Okay. Welcome to area of triangle calculator. After that, we'll import time. Let's import time first. Okay. Import time because everything is like getting everything just like line by line like, without giving a second. It's very poor. So I'll import time. Okay, and I'll import time. उसके बाद what I'll do is here I'll say time dot wait 1 second. Like time has to wait 1 second. Okay. So what happened next? Next is we'll ask the data. So print please give the following data. उसके बाद we'll create some variables like what is necessary for triangles area. It's half into base into height. So base is required and height is required, right? So base is equal to it can be float and it can be int too. So float input and we'll ask enter the value of base. ठीक है. उसके बाद we'll create a height. So height of y. You have to create a variable, right? So height is equal to height also can be float. Float means float means like 3.14, 4.2. Int means 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so it will give answer is 0.00, point 0. So float again input and here please enter the base. Oh, sorry, the height. Okay. So now what will happen? We'll create a variable area. Area is equal to now we'll give it. So it is half. We can write half as 0.5 half into base into height. So we have to write like that. Half into base into height. We can write it in these brackets as so.
ओके, उसके बाद प्रिंट डिटेल्स। अभी हम उसको पहले यूजर को कंफर्म कराएंगे कि दीज आर द डिटेल्स। अब डिटेल्स में we'll just say time dot wait how much, उसको हम कुछ ना कुछ तो वेट कराएंगे। so time dot wait again 1 second and then print your नहीं, the given, which should write the given base is, अब यहाँ पे मैं सेमी कॉलन अटैच करके या कॉमा, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि अगर दो हमें मानो किसी कुछ प्रिंट करना है और उसके आगे हमें वो डिस्प्ले करना है कि जो यूजर ने दे रखा है, यूजर ने एंटर कर रखा है, तो वी हैव टू जस्ट राइट विद कॉमा और उसके बाद हमें कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने हैं, सिर्फ वो लिखना है जो विच इज जिसकी वैल्यूज यहाँ पे पास हो। ठीक है, इसके बाद वील अगेन प्रिंट द गिवन height, make sure अब now ये सेम होने चाहिए, is comma so that it maintains the uniformity और अच्छा भी लगता है height। ठीक है, अब उसके बाद we'll print the area calculated is and comma what area। ठीक है, सो ये मैंने ज्यादा एक्चुअली मैंने जानबूझ के से लंबा करा है। क्यों? क्योंकि इफ वी मैं सिंपली बता देता हूँ कि ये कितनी टाइम, अगर मैं इसको प्रॉपरली नहीं बनाता तो ये कितनी देर का होता प्रोजेक्ट। एक्चुअली ये 12 लाइंस का हो गया। लेट्स रीचेक इट कि हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है। प्रिंट वेलकम triangle calculator, have a weight graph, we'll give the following details and enter the value of base, enter the value of height, area equals 0.5 into base into height, print details, or time dot weight dot one, print, actually I think it's true, like it's all okay. Okay, okay, time dot weight, तो हमने टाइम, अब देखते हैं टाइम। देखो गाइस, हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, सिर्फ इंस्टॉल टाइम, like I'm very confused now, couldn't find a version that's like टाइम नहीं एक्चुअली इम्पोर्ट होता, टाइम इम्पोर्ट होता है बस। इफ आई जस्ट गो टू टाइम डॉट स्लीप, सॉरी गाइस, स्लीप भी होता है, टाइम डॉट वेट नहीं होता कुछ भी, टाइम डॉट स्लीप होता है। लाइक अभी अभी याद आया मेरे को, एंड दिस इज, मैंने पॉज करके मुझे याद नहीं आया, अपने आप से एकदम से याद आया। लेट्स सी कि ये, हाँ, welcome to the area triangle of welcome to area of triangle calculator, please give the following data, enter the base, suppose अभी मुझे हमने खुद एक ट्राइंगल ले लेते हैं, मानो उसका बेस है 4 और हाइट है 6, तो हाफ इंटू 4 इंटू 6, तो हाफ बटा, तो it should be okay। if I enter the base, तो base 4 था, and if I enter the height was 6, so it should be 12। enter details दे रहा है, and the given base is 4, the given height is 6 और the area calculated is 12.0। अब हमने ये तो प्री डिजाइन था हमारे दिन, मतलब हमने भी जस्ट प्री डिजाइन कि ओके ऐसे कैलकुलेटर है, इसकी ये है, इसकी ये है, हाइट एरिया बेस एरिया, और हमें पता है आंसर। बट अब हमें आंसर नहीं पता, सपोज लाइक द बेस इज 87866 and the height is suppose, okay, okay, सो डिटेल्स दे रहा है और इसने कैलकुलेट करा है ये रहा एरिया, तो like मोस्ट प्रोबेबली कलेक्ट ही करेगा एज बिकॉज आवर कोड इज रनिंग फाइन। ओके, सो अब इसको हम सब डिलीट कर देते हैं, और अब मैं बताता हूँ कितनी लाइंस का एक्चुअली ये कोड है। वो 12 लाइंस का था, एंड ये तो आई थिंक 4-5 लाइंस का होगा। सबसे पहले एक हमें बताने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे बेस, बेस इक्वल्स फ्लोट इनपुट, और यहाँ पे डालेंगे प्लीज एंटर द बेस। ठीक है, उसके नीचे हाइट, हाइट इक्वल्स फ्लोट इनपुट, एंड यहाँ पर प्लीज एंटर द हाइट। ठीक है ना। नीचे एरिया, एरिया इक्वल्स हाफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन डायरेक्टली प्रिंट, प्रिंट द एरिया। ये 4 लाइन्स, एक्चुअली ये 4 लाइन्स का हो गया। सो लेट्स सी कि सही में जल्दीबाजी में मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि अब देखो यहाँ पे हमने कुछ इंट्रोड्यूस कराया ना, हमने हमने अपने व्हाट वी कैन से ट्रैफिकर्स, हमने अपने यूजर्स को, एक्चुअली हमने अपने यूजर्स को ना तो वेट कराया यहाँ पर, बस जल्दी से ना इंट्रोड्यूस कराया व्हाट इज दिस लाइक ऑल, एंड जल्दी जल्दी बस खत्म हो गया। सो लेट्स सी, प्लीज एंटर द बेस 4, हाइट 6, 12 आ गया। ठीक है, अब कुछ और बड़ा सा आ गया, वो ई पे आ गया 3 सो देखो यही तो है। इंट में एक्चुअली ले लेता, बट इतना ज्यादा ये जो जा रहा है ना, इतना नहीं लेता। इंट इज एक्चुअली ओनली 5.0, इट्स नॉट, वो आगे नहीं बढ़ सकता, इट्स विल बी जस्ट, इट विल बी टेलिंग यू 3.85 और 3.8 ओनली। यस, इंट नहीं देता है ज्यादा वैल्यू। इफ ओके, लेट्स ट्राई, एक बार इंट देख लेते हैं हम, बस हमें फ्लोट को हटा के इंट देना है। हाँ, तो अगर मैं, और यहाँ पे हमसे बेस पूछा है 6.8 दे दूं, तो यहाँ पर इसका ये नहीं आएगा, यहाँ पर ये एरर दे देगा, 6.8 नहीं चलेगा। सो यही तो फायदा है, लाइक अभी तो इंट ही ज्यादा यूज हो जाता है एज कम्पेयर टू फ्लोट, बट ये तो छोटा लेवल पे है ना, बड़े लेवल्स पे तो फ्लोट ही यूज करे जाते हैं। So yes, this is all. And guys, like very good videos are coming next, because like I have, like browsed all the internet, like what I can do, what I can make. I get everything, and yes, so many new videos and new cool videos. Like I'll tell you how you can make your, what we can say, how you can make, what yes, how we can make our own virtual assistant. You can name it anything, like Alexa, Jarvis, whatever you want to. Like Cortana से तो, like seriously जो हम बनाने वाले हैं वो Cortana से ज्यादा अच्छा है। Like Cortana तो I found her useless. Seriously, Cortana is useless. What I found till now, because मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनती है ये, and yeah, so I hope guys will love this video. If you did, please like and subscribe my channel, guys. I am, finding that the people, person who are watching my video, the 90, I think 98 tha, the 98% of the people who are watching my video haven't subscribed the channel. So guys, please, it took a lot of efforts. Please subscribe my channel. Please subscribe our channel. It's actually our community. So I hope guys you loved it. Thank